Hello dear students, I'm Abdul Shamim, Assistant Professor of English at Renuka College, Bazaars, Nagpur. Today we are going to see the poem In the Bazaars of Hyderabad, written by Sarojini Naidu, prescribed in the syllabus of BA first year, first semester for the students of RTM Nagpur University, Nagpur. Now, Sarojini Naidu is an Indian political activist and poet. She is the very first woman to become the president of the Indian National Congress, as well as she became the very first woman to become the governor of the Indian state. She has been given the sobriquet of the Nightingale of India. In the present poem, she shows the vibrant bazaars of India, particularly of Hyderabad. That is the place of her birth. And in this poem, there is an undercurrent of politics. As under Swadeshi movement, she encouraged people to buy Indian products from the traditional Indian markets and to boycott the British product. That is the message which is undercurrent in the poem. आज जो हम पोएम देखने वाले हैं उस पोएम का नाम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, जिसे लिखा है सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं और आप बहुत ही महान पोएट थे। आप पहली इंडियन वुमेन हैं जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके साथ साथ ही पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो गवर्नर बनी इंडियन स्टेट की। आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, आपको नाइटिंगेल कहा जाता था इंडिया, इस नाम से आपको नवाजा गया था। आप जिस अंदाज से कविता लिखती थी, इसीलिए आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया था। इस पोयम में वो इंडियन बाजार्स के बारे में बताती है, खासकर जहां वो पैदा हुई वहां के बाजार के बारे में बताती है, हैदराबाद जहां वो पैदा हुई है। इसके साथ साथ इस पोयम में पॉलिटिकल अंडरकरंट है। जब उन्होंने ये पोयम लिखे उस समय स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और स्वदेशी मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज कर रही थी कि वो इंडियन प्रोडक्ट खरीदे और वो भी भारतीय बाजार से खरीदे और ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉयकॉट करे। लेकिन उस समय ब्रिटिश ने इंडियन न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया था। इसीलिए सरोजिनी नायडू अपनी पोयम के माध्यम से ये मैसेज लोगों के बीच में फैलाती है कि वो इंडियन प्रोडक्ट इंडियन मार्केट से खरीदे और ब्रिटिश प्रोडक्ट को बायकॉट करे। Now, it is also a point to be noted that the poem is written in a dialogue, in the form of a dialogue. Here we find that there is a dialogue between the poet as well as the various vendors, merchants, sellers, those who have brought their products in the market. And here it is in the form of a conversation. अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि ये पोयम एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में है, जिसमें पोएट बाजार में जो लोग अपने सामान लेके आए हैं, अलग अलग सामग्री बेचने के लिए, उन लोगों से वो सवाल पूछती है। What do you sell? Oh yeah, merchants. Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. Now, the poem has been written in a very simple and lucid language, and the picture of a busy market has been presented before our eyes, where the
merchants are selling various products, and in order to attract the customers, they have displayed them quite attractively. The poet poses the question before the merchants what they are selling, whether they are selling the turbans of dark red in color and silver turbans and tunics of purple brocade, mirrors, whether they are also selling mirrors with panels of amber. They have been framed in amber. It is a kind of a dark yellow color wood. Daggers with handles of jade. Jade, it's a precious stone of green color. So she asked the merchants what they are selling, whether they are selling the turbans of dark red in color and silver, whether they are also selling the tunics of purple brocade. It is a kind of a fabric brocade. Whether they are also selling the mirrors which have been framed in amber, as well as the daggers which have got the handles of precious stone of green color. अब यहां पर यह बात बहुत ही ध्यान देने लायक है, सरोजिनी नायडू इस पोयम में बाजार का चित्र हमारी निगाहों के सामने पेश करती है, और जिस तरीके से बाजार में कितने बिजी एक्टिविटीज होती है। अब वहां पे सबसे पहले वो जो मर्चेंट्स है जो अपना अलग अलग प्रोडक्ट जो लेके आए हैं, और बाजार में उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से उन आर्टिकल्स को, वेयर्स, डिफरेंट आर्टिकल्स जो अलग अलग जो बेचने के जो आर्टिकल्स है जो उन्होंने लेके आया है और अपने दुकान में बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाया है, ताकि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनके पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या बेच रहे हो, क्या तुम टर्बन्स बेच रहे हो, जो हेडगियर होता है, टर्बन्स, पगड़ी, जिसे पगड़ी कहते हैं हम, क्या तुम वो बेच रहे हो, जिसका और बड़ी खूबसूरत पगड़ी है वो, गहरे लाल और सिल्वर कलर की। ट्यूनिक्स के लॉन्ग शर्ट, क्या तुम ट्यूनिक बेच रहे हो, पर्पल ब्रॉकेड, ब्रॉकेड इट्स अ काइंड ऑफ अ फैब्रिक। कुछ दुकानदारों ने बड़े खूबसूरत अंदाज से आईने अपनी दुकान के सामने लगा के रखे हैं। कहती क्या तुम खूबसूरत आईने बेच रहे हो जिसके पैनल्स जो हैं, जो फ्रेम है एम्बर, जो डार्क येलो कलर की वुड है उससे उसको फ्रेम किया गया है। या जो खंजर है, डैगर्स, जिसके जो हैंडल है बड़े खूबसूरत ग्रीन प्रेशियस स्टोन है, उससे उसके हैंडल बनाए गए। क्या तुम डैगर बेच रहे हो? इसी तरीके से बाजार से वो आगे बढ़ती है। What do you weigh, ओ ये vendors? Saffron and lentil and rice. What do you grind, oh yeah maidens? Sandalwood, henna and spice. What do you call, ये paddlers? Chessmen and ivory dice. Then she is in the market, and the conversation is going on between the poet as well as the merchants and the vendors. Now she moves forward in the busy market, where the vendors and the merchants have come and they have displayed their various articles of selling in a very attractive way. Now she moves forward, and suddenly she finds that the vendors are weighing something. So she asks them what they are weighing, whether they are weighing saffron or lentil or rice, because they have also, the vendors have brought different grains. Lentil, it is a kind of a pulse, rice and saffron.
She also comes across the maidens, and they are grinding sandalwood, henna, and different spices. So she asks them what they are grinding. She also comes across the vendors, the hawkers, those who are moving their carts and calling to attract the customers to buy from them chessmen and dice of ivory. अब यहाँ पर पोएट बाजार में है और बाजार में ही और बाजार की सारी एक्टिविटी के बारे में हमें बड़े खूबसूरत अंदाज से बता रही है। उसके बाद बाजार में अलग अलग मर्चेंट्स आए हैं, वेंडर्स आए हैं और उन्होंने अलग अलग गुड्स और प्रोडक्ट्स लाए हैं बेचने के लिए। अब वो आगे बढ़ती है और उसकी निगाह पड़ती है सैफरन, केसर, लेंटिल, मसूर दाल, राइस। बाजार में वेंडर्स जो सेलर होते हैं उन्होंने अनाज लाए हैं बेचने के लिए। तो उनसे पूछती तुम क्या बेच रहे हो, क्या तुम क्या तोल रहे हो, क्या तुम केसर तोल रहे हो, मसूर दाल, चावल। फिर आगे बढ़ती है, जो उसे नजर आती है अनमैरिड जो गर्ल्स, यंग अनमैरिड गर्ल्स होती है, वो कुछ सील पर पीसते हुए नजर आती है। तो उनसे पूछती तुम क्या पीस रही हो, क्या तुम सैंडलवुड पीस रही हो, हिना मेहंदी पीस रही हो, या कोई अलग अलग किस्म के मसाले पीस रही हो। फिर आगे बढ़ती है, उसे पैडलर्स नजर आते हैं जो घूम घूम के, फेरी वाले होते हैं जो घूम घूम के ठेले पर माल बेचते हैं। उनसे पूछती हो तुम क्या बेच रहे हो। उनके पास होता है मोहरे, चेसमैन जो चेस खेलने के मोहरे होते हैं वो बेच रहे हो, या डाइस होते हैं जो आइवरी से बने होते हैं, क्या तुम वो बेच रहे हो। वो उनसे पूछती है। What do you make? Oh, ye goldsmiths. Wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king. In the third stanza also, the poet says she is still in the bazaar and she is moving around the bazaar and comes across various activities. Now in the third stanza, she comes across the shops of goldsmiths and she asks them what they are making. They are making the wristlets or the rings or the anklets, whether they are making the bells for the feet of pigeons, and they are made so delicate as delicates are the wings of dragonfly. She also inquires whether they are also making the girdles of gold for dancers and seats of gold for the king. अब उसके बाद वो बाजार में और आगे बढ़ती है और सुनार की दुकान के करीब पहुंचती है। वो पूछती है क्या सुनार लोग क्या बना रहे हैं, क्या वो रिस्लेट बना रहे हो, क्या हाथ में पहनने के कंगन बना रहे हैं, या पैर में पहनने के पायजब बना रहे हैं, या हाथ में पहनने की अंगूठी बना रहे हैं, क्या वो बेल्स बना रहे हैं जो कबूतर के पैरों में पिनाए जाते हैं। बड़े डेलिकेट होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, वो ड्रैगन फ्लाई विंग के जैसे, मतलब बड़े जिस तरीके से नाजुक होते हैं ड्रैगन फ्लाई के विंग, उसी तरीके से उस नाजुक अंदाज में उन्होंने वो बेल्स बनाया है जो पिजन्स के पैरों में पहनाए जाएंगे। या वो गिडल्स बना रहे हैं जो डांसर्स, गिडल्स मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ अ बेल्ट विच इज पुट ऑन अराउंड वेस्ट, कमरबंद। क्या वो नाचने वालों के लिए, नाचने वालियों के लिए कमरबंद बना रहे हैं, या फिर वो
सीध कवर होते हैं जो डैगर का, तो क्या वो बना रहे राजा की जो डैगर होगा उसको रखने का कवर बना रहे गोल्ड का। What do you cry? Oh, ye fruitmen, citron, pomegranate, and plum. What do you play, O musicians? Sitar, sarangi, and drum. What do you chant, O magicians? Spells for eons to come. Now, we know that bazaar is a kind of a place which is full of activities. And we find not only various kinds of products and articles in the market, but also various fruit sellers, even the musicians, and as well as the magicians, because it is the place to sell not only the products but also their skills. The musicians are going to play different kinds of musical instruments and will earn money. Same is the case, the magicians are also going to display their skill of magic and they are also going to earn money. So the vendors, sellers, and merchants are selling their products and goods, whereas the musicians and the magicians, they are selling their skills and earning money. So she asked the fruit sellers what they are selling, whether they are selling the pomegranate, plum, or citron. Then she comes across the musicians and they are playing various kinds of musical instruments like sitar, sarangi, and drum. Then she finds that the magicians are showing different skills of their magics and people have become spellbounded. And even after leaving from the market, they are going to they are going to feel the magic of the magicians. अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती है। हमें मालूम है बाजार कितनी एक्टिविटी वाली जगह होती है, वहां सिर्फ सामान बेचने वाले ही नहीं आते बल्कि वहां पर म्यूजिशियन और मैजिशियंस भी आते हैं, क्योंकि वो भी अपनी वहां स्किल बेचते हैं और स्किल बेच के पैसा कमाते हैं। म्यूजिशियन अलग अलग तरीके से अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और बजा के लोगों का दिल बहलाते हैं और खुश होकर लोग उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें उनकी स्किल से खुश होके। उसी तरीके से मैजिशियन भी अपनी जादू की स्किल से करतब दिखा के लोगों का मनोरंजन करते हैं और लोग खुश होके उनको पैसे देते हैं। अब पोएट आगे बढ़ती है और उसे नजर आती है फ्रूट सेलर की आवाज। वो कहती है, तुम क्या बेच रहे हो? क्या तुम सीट्रन, मौसम्बी या संतरा बेच रहे हो, या अनार बेच रहे हो, या प्लम बेच रहे हो? फिर आगे बढ़ती है, उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की आवाज आती है। वो म्यूजिशियन से पूछती है, तुम क्या बजा रहे हो? क्या तुम उसे नजर आते हैं कोई सितार बजाते हुए, कोई सारंगी बजाते हुए, कोई ड्रम बजाते हुए। थोड़े आगे बढ़ती है तो देखती है कि जादूगर खड़े हैं और वो अपने जादू का करतब दिखा रहे हैं और लोग स्पेल बाउंड होके उनका जादू देख रहे हैं, जो वहां से निकल जाने के बावजूद भी वो जादू उनके दिलो दिमाग पे बैठे रहेगा कई सालों तक। What do you weave, oh yeah, flower girls with tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms, new garland to perfume the sleep of the dead. Suddenly, she comes across the flower girls and she asks them what they are selling, what they are trying to weave, whether they are weaving the shred which is being made of dark blue color, flower and red, and they are going to be put on
those thread of flowers are going to be put on by the bridegroom as his crown. She asked the flower selling girls what they are weaving, whether they are weaving shreds which are going to become the sheets for the newly wedding couples. She asked them whether they are knitting the sheet of flowers which are recently picked, which are recently which are recently plucked, and they are so fresh. And those blossoms sheets, those sheets of flowers are going to be used on the grave of the dead in order in order to make the grave of the dead in order to make the grave of the dead person full of fragrance, in order to give in order to send the grave of the dead. The flower girls are weaving the flowers which are recently plucked, and they are so fresh that they are emitting wonderful aroma. उसके बाद सरोजिनी नायडू और आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, ओ फ्लावर सेलिंग गर्ल्स, तुम क्या क्या बना रही हो इन फूलों से जो ब्लू, डार्क ब्लू और रेड कलर के हैं? क्या तुम इससे दूल्हे का सेहरा बना रही हो, या तुम जो फूलों की चादर बना रही हो, जो रिसेंटली मैरिड कपल है उनके बिस्तर पे डालने वाली जो फूलों की चादर है, क्या तुम वो बुन रही हो, या तुम इन अभी अभी तोड़े हुए फूलों से तुम वो फूलों की चादर बना रही हो जो किसी की कब्र पर, फूलों की चादर वो किसी की कब्र पर चढ़ाई जाएंगी. I hope you have understood the poem. Thank you.